Guru Tegh Bahadur Khalsa College extends a warm welcome to first semester students who begin their journey towards another milestone and wish you all a happy and a successful stay here. The first few days at college might feel a little daunting, but it's normal to feel apprehensive. The comfortable and the informal environment at Khalsa College will definitely make you more comfortable, more confident, and positive towards all your new. वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह. Thank you, dear students. This is the tradition that we follow at Khalsa College. But yes, we are Indians first. So I request all you to please stand up for the national anthem. Let's begin. 1, 2, 3. Jana Gana Mangal Dayak Bhai Bharat Bhagya Vidhata Punjab Sindh Gujarat Maratha Dravil Uttal Ganga Vindhya Himachal Yamuna Ganga Uchchal Jaladi Tiranga तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गाए तब जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे. Thank you, everyone. Now I would request our Principal Sir, Vice Principal Sir, and Bursar Sir to please come on the stage. Dr. Jaswinder Singh to address the August gathering and motivate us and guide us throughout this new journey of the students. Thank you, sir. Dear parents of the new batch, my colleagues in Khalsa College, and the new entrants to the University of Delhi. सब तो पहले तो फतेह प्रवान करो वाहिगुरु जी का खालसा अगर इसे तरीके नाल तुसी फतेह दा जवाब देना है तो फिर तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा काम. खालसा कॉलेज जिहदे विच जिहड़ी आवाज़ है जदों असीं इत्थे बोलिया तो पूरी अकाल तख्त साहब नूं सुननी चाहिए कि यस खालसा कॉलेज is doing the orientation. So let us दोबारा रिसाइट करिए फतेह नूं वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह. क्या बात. ये फतेह जिहड़ी है साडी चढ़दी कला दा प्रतीक है. It is not only the salutation. It is, the address to that Akal Purukh. Yes, your prodigies, your creations are here on this earth. So, this is the first day, and let me welcome you all to this very, very special occasion when you have passed out from the schools, appeared for the CUET test, and you have secured the place for yourself in the University of Delhi and Khalsa College. Let me first begin with the University of Delhi. Our registrar, Professor Vikas Gupta, will be joining us shortly. He is on his way. He has gone to some other institution first, and then he will be joining us also.
and then my colleagues, who are here from the different departments. Uh, we will share with you our thoughts and our vision for this institution, and also the facilities and other things that we offer both in the University of Delhi as well as in Khalsa College. And your kids, your wards are no more under any protected environment. School में हम क्या करते हैं? We go to the class, we meet our teacher, we do our preparation, we come back to our home, then either we go for the sports or we do for the coaching and then appear for the ultimate examination. Here the university system to begin with is totally different. It gives you a lot of liberty, it gives you a lot of freedom. I would request the organizers के जो अब बच्चे आते हैं उनको ऊपर भेज दो आप. Don't worry, there is adequate space there. बहुत space है ऊपर. So you see, you have come out of the school environment and you have joined the University of Delhi. And University of Delhi is one of the premier university, not only of India, but it is perhaps the third best university in whole of Asia. In terms of undergraduate education, I am not saying in every aspect, but in terms of undergraduate. When you go to the states, Haryana, Punjab, Uttar Pradesh, or Tamil Nadu, or any other state, you will find that there is a difference between the colleges and the universities. University के departments university में होते हैं, colleges अपने हिसाब से चलते हैं. But the University of Delhi is different. Once you enter the first year, right from day one, you are the student of the university, and it is our joint responsibility to give you the avenues, to provide you the facilities that are required for your overall personality development. So the University of Delhi has taken many initiatives recently, and one of these initiatives is to introduce, I will request Dr. P.D. Sharma to come on the stage. The University of Delhi, one of the initiatives that has been taken is to introduce the National Education Policy 2020. जो 2020 में हमारी National Education Policy आई थी, जिसके बारे में अक्सर आप जिक्र टीवीज और बाकी डिबेट्स में सुनते हो. तकरीबन हर जो 5वां पेज है हर न्यूज़पेपर का वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर डिवोटेड होता है. आज भी अगर देखोगे तो बहुत सारे आर्टिकल्स उसके ऊपर हैं. एजुकेशन टाइम्स, इसी तरीके से हिंदुस्तान टाइम्स में एक एजुकेशन का सेपरेट सेक्शन है. And it is not the course content which is being discussed. It is the possibilities that the students they face. So University of Delhi has designed the courses. They set the standards for the colleges to follow. जैसे ये benchmarking होती है कि इससे कम हम नहीं कबूल करेंगे. Every institution, every college, every higher education institute is supposed to follow those standards. And if we do not do that, the university is going to penalize us. They do very strict scrutiny of each and every college. हमारे देश में तकरीबन 42,000 कॉलेजेस हैं जो ऑल इंडिया सर्वे ऑफ हायर एजुकेशन है. उनमें जो पहले 50 कॉलेजेस हैं उनमें तकरीबन 27-28 कॉलेजेस यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के. So this is the standard, and Khalsa College is perhaps among the best for first 30 colleges. So, and this is not
This ranking, which is a public ranking, Government of India, Ministry of Education का एक डिपार्टमेंट है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क, वो ये रैंकिंग करते हैं। इसी तरीके से हमारे हर कोर्स की जो भी आपको पढ़ाया जाएगा, बी एट इन द साइंसेज, सोशल साइंसेज, लिटरेचर और एनी अदर सब्जेक्ट, इसकी एक एक्टिविएशन, इसकी एवेल्युएशन होती है कि हमारा कोर्स किस तरीके का है और किस तरीके से इसको कंडक्ट किया जाता है। तो उससे जो है कॉलेजेस के टीचर्स, यहाँ की फैसिलिटीज, हमारे क्या रिजल्ट्स हैं, हमारे बच्चे किस बैकग्राउंड से आए हैं और कहाँ ये जा रहे हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो नेशनल एक्रेडिटेशन काउंसिल जो है हमारी, जिसको हम नैक कहते हैं, नेशनल काउंसिल फॉर एक्रेडिटेशन, वो जो है दे डू द evaluation as far as the course content and its deliveries are concerned in the colleges. So you know the standards are set by them. और वो standards खाली ये building खड़ी करने से नहीं आते, वो बच्चों के रिजल्ट से, वो आपकी कमिटमेंट से आएंगे। And the University of Delhi helps us, it guides us, it motivates the students and others. जब आप यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में आते हो तो ये कोई आइसोलेटेड यूनिट नहीं है खालसा कॉलेज। अभी आपने न्यूज़पेपर में भी देखा होगा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी ने क्लस्टर ऑफ कॉलेजेस बनाए नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत। उन क्लस्टर्स में क्या है कि देयर मे बी सम फैसिलिटीज व्हिच आर नॉट देयर इन खालसा कॉलेज। आवर स्टूडेंट्स कैन गो टू दोस कॉलेजेस, अदर कॉलेजेस विद दीस फैसिलिटीज आर, and those institutes which do not have the facilities and Khalsa College has that, we will welcome those students. So in this way, you know, there is going to be a lot of interaction between the institutions. आपने अपने CUET के स्कोर के ऊपर जो भी मैपिंग की उसके मुताबिक आपको रिजल्ट मिला, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने आपको एडमिशन दिया। नो, देयर आर लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशन। ये तकरीबन हमारी प्रोसेस मार्च से शुरू हुई है। entire preparation start, I am part of that committee जो एडमिशन करती है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में, जो रिकमेंड करती है। तो इस कमेटी ने मार्च में अपना काम शुरू कर दिया था और अभी तक you can see that almost 7 to 8 months have gone into it, and we are just trying to see that all the institutions can be clubbed or the students can be given the best facilities, and they should not be the students of University of Delhi, rather they should have the international standard। अभी जो कोर्स रिवीजन हुई है दिल्ली यूनिवर्सिटी की, ये आप देखोगे कि अंडर ग्रेजुएट लेवल पे किसी भी यूनिवर्सिटी में इस किस्म की कोर्स रिवीजन नहीं, एक्सेप्ट 1 or 2 private universities which have very limited and they are not affiliating universities। तकरीबन हमारे 72 इंस्टीट्यूशंस हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के, तो सभी को एक साथ एक जैसा ट्रीटमेंट दिल्ली यूनिवर्सिटी से दिया जाता है। You can also become members of various committees in the University of Delhi। दिल्ली यूनिवर्सिटी का हेल्थ सेंटर है, लाइब्रेरी है, स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसकी आपसे थोड़ी सी फीस भी उन्होंने चार्ज की है, और बहुत सारी डेवलपमेंट दिल्ली यूनिवर्सिटी में है। सेंट्रल लाइब्रेरी है हमारी जो काफी एक्सटेंसिव है। You can become temporary members of that also. Some things are not available here. So this is as far as the University of Delhi is concerned. Coming to Khalsa College. Khalsa College is a premier institution and it is maintained by Delhi Sikh Gurudwara Management Committee। जो हमारी कमेटी है गुरुद्वारा कमेटी, वो इसको मैनेज करती है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में हमारी कमेटी के 4 कॉलेजेस, 12 स्कूल्स हैं, 11 और हमारे इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर लर्निंग, और दिस इज द ओनली इंस्टीट्यूशन दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी अलॉन्ग विद श्रोमणी गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी अमृतसर, उसको हम प्रबंधक कमेटी कहते हैं, यहाँ मैनेजमेंट कमेटी कह देते हैं, जिसमें तकरीबन 80% जो पैसा गुरुद्वारों में कलेक्ट होता है, अगर आप 10 रुपए का गुरुद्वारा में मत्था टेकते हो तो उसके 8 रुपए
हमारे इंस्टीट्यूशंस के ऊपर खर्च किए जाए एजुकेशन के ऊपर. दिस इज द कमिटमेंट ऑफ दिल्ली सेक्युलर अमेंडमेंट कमेटी. और institutions में let me make it very clear that these are the secular institutions. Once you have taken the admission, of course we have separate seats for the 6 students as well as for the unreserved category. And of course, other जो हमारे statutory provisions है persons with differential abilities, उनके लिए ये persons with disabilities, उनके लिए कुछ seats reserved हैं. But predominantly ये दो categories. But despite this, you will find in your classes that almost 60% of our students, they are nonsense. And therefore the responsibility of these 6 students goes up कि ये उनके institutions में अगर किसी non-sick ने admission लिया है तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उनको इस तरीके से ट्रीट करेंगे that they should not feel कि उन्होंने कोई गलती की है खालसा कॉलेज में. They should, when they go out, I can tell you, there are number of students who are settled in diplomatic staff, foreign service में हैं, Indian civil service में हैं, पुलिस सर्विस में, दिल्ली पुलिस में तो बहुत ही ज्यादा है, जुडिशियरी में बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स हैं, right up to the top level, हाई कोर्ट लेवल तक हमारे स्टूडेंट्स हैं जो जजेस भी हैं. तो दे टेक टाइम, चाहे वो हिंदू है या सिख है, एंड दे ऑलवेज वांट टू कम बैक टू खालसा कॉलेज, टू यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, एंड दे वांट टू कंट्रीब्यूट. कल ही हमारी एलुमनाई मीटिंग कमेटी की मीटिंग थी जिसमें डॉक्टर निमी सिंह हु इज प्रोफेसर इन फिजिक्स, शी इज द सेक्रेटरी ऑफ दैट, और हमारे बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो आए हुए थे. एंड दे हैव nostalgic ideas, the feelings for this institution. They want to take this institution to much higher levels. So therefore, it is the responsibility of all of us, especially the younger generation like you who are coming to this. Khalsa College, well, let me begin with my colleagues. My immediate colleague is the Vice Principal, Dr. Professor Surinder Kaur. He is there. Ma'am, can you stand up, please? She teaches botany, and you will find her roaming here and there. And please don't mind अगर वो आपको कोई भी थोड़ा बहुत correction करने के लिए कुछ कहते हैं. Another person who is very important and central to this is Dr. P.D. Sharma, who has done the entire admission process for you. जितने भी आपके सवाल जवाब आप तक पहुंच पाते हैं, जो आपकी क्लासेस हैं और जो आगे आने वाली चीज है पूरी की पूरी आपका क्लास का कंडक्ट, वो प्रोफेसर पी.डी. शर्मा look after कर रहे हैं. May I request the admission in charge also, Dr. Gurpal, to come on the stage. ये हमारे एडमिशन के कन्वीनर हैं और इनकी सबसे बड़ी खूबसूरती है कि ही इज वेरी पोलाइट, वेरी सोबर, और आपकी हर प्रॉब्लम को वो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. खालसा कॉलेज में हमारे जो है perhaps in the entire university we have the best literate teaching faculty here, and they are totally committed. So it is for you. जैसे मैंने कहा था कि स्कूल और कॉलेज में फर्क होता है, अगर आप क्लास में नहीं आते हो तो आपको भी बहुत ज्यादा डांटने लगती है, but losers are you. It is not the teacher. टीचर प्रिपेयर होके आता है, आपने अब ये देखना है कि आपने कितना टाइम टीचर के साथ लगा के अपनी जिंदगी को आगे चलो. इट्स नॉट एज स्केरिंग, बहुत ही, दिस लाइफ इज सो ब्यूटीफुल. आई एम ग्रोइंग ओल्ड बट एट द सेम टाइम आई हैव एंजॉयड माय लाइफ एज अ टीचर, माय लाइफ एज अ स्टूडेंट, एंड आई कैन टेल यू देयर आर न्यूमरस अपॉर्चुनिटीज. इतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज होती हैं बच्चे के पास. द ओनली थिंग इज दैट you should know the time management.
मेरे जो नॉन टीचिंग के कोलीग्स हैं वो भी इक्वली उतने ही सीरियस हैं, चाहे वो लेबोरेटरीज में आपको मिले, बिकॉज वी हैव सम ऑफ द बेस्ट लेबोरेटरीज इन खालसा कॉलेज, अगेन कंपेरेबल टू द बेस्ट। जो स्टूडेंट्स और टीचर्स बैठ के डिसाइड करते हैं कि हमारी लैब में क्या इक्विपमेंट होने चाहिए, नोबडी क्वेश्चंस दैट एंड रिसोर्सेज आर नॉट द कांस्टेंट। एज आई सेड, गुरुद्वारा कमेटी हमारी जो है वो 80% जितनी कलेक्शन होती है वो खाली एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के ऊपर खर्च करती है। सरदार हरमीत सिंह कालका, he is the president of District Gurudwara Management Committee. He will also be meeting you very soon, not today but some other day. And Sardar Jagdeep Singh Paulo, he is the General Secretary, and they have the entire team who are totally committed, very young team, but totally committed to the development of the institution. So teachers जो है, they will be meeting you in the classes. They perhaps for first 1 or 2 days you will have the subject specific orientations also in your classrooms. कि आपने आपके और टीचर के बीच में कम्युनिकेशन किस किस्म का होना चाहिए। There are various types of courses जो इस नई एजुकेशन पर पहले भी थे, मगर इसकी और शार्पनिंग और ज्यादा नई एजुकेशन पॉलिसी में भी। We have the core subjects जिसके बेसिस के ऊपर आपको एडमिशन मिला है, वो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। हमारे पास बहुत सारे उसी सब्जेक्ट में आपको electives मिलेंगे जो आपने चूज कर रहे हैं। It depends upon your interest कि आप अपने डिसिप्लिन में किस एरिया में, फाइनेंस में अगर पढ़ना चाहते हो, या बॉटनी वाले स्टूडेंट एनवायरनमेंट के ऊपर करना चाहते हैं, या किसी खास किस्म के प्लांट्स के ऊपर वो करना चाहते हैं, बायोटेक्नोलॉजी में वो आगे इंटरेस्ट है उनका। So you see, it is the regular interaction. Similarly, in computer science, mathematics, for instance, computer science में आपके साथ बहुत सारी options specialization के लिए आएंगी। Mathematics में बहुत सारी, economics, commerce, all these they give you the diverse bouquet of the options. जैसे बुके में हम एक चूज करके फ्लावर लगाते हैं, similarly you will be picking up your electives. ये तो आपके सब्जेक्ट का है। इसके अलावा बहुत सारे जनरल इलेक्टिव्स होते हैं। जनरल इलेक्टिव जेनरिक हैं इन नेचर, जो आपके अदर इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं। फॉर इंस्टेंस, स्टूडेंट ऑफ मैथमेटिक्स वांट्स टू स्टडी म्यूजिक, ही वांट्स टू लर्न म्यूजिक, तो म्यूजिक की ऑप्शन है। A student who wants to study, say for instance, a student of economics may be very keen to know a little bit of physics. He can choose that subject. A computer science students will be very keen to know the mathematics की क्या options हैं. So vice versa, there is a diverse field. और पहले क्या था कि हम जो खेल कूद करते थे, जो स्पोर्ट्स थी हमारी या बाकी एक्टिविटीज थी, उनको हम कोई मार्क्स नहीं देते थे। आपने जितना मर्जी ग्राउंड में खेल लिया, but from this session onwards, every student will choose very carefully जो हमारे पास वैल्यू एडिशन कोर्सेज हैं, उसमें स्पोर्ट्स, योगा, एथिक्स और बहुत सारे तकरीबन आई थिंक 40 के आसपास हमारे पास वैल्यू एडिशन कोर्सेज हैं, और 41 हमारे पास इसी तरीके से स्किल ओरिएंटेशन के कोर्सेज हैं। स्किल एनहांसमेंट अभी करंटली we already have many of these, but the University of Delhi has given us a new set of skill enhancement courses, जिसके लिए टीचर्स की ट्रेनिंग आपके आने से पहले ही शुरू हुई। And please choose them very very carefully in your orientations, जो आपकी सब्जेक्ट स्पेसिफिक ओरिएंटेशंस होगी। आपने क्या स्किल एनहांसमेंट कोर्सेज लिए हैं, डॉक्टर पीडी will share with you the entire information. Library, for instance, is a very important component. जब आपको टीचर पढ़ाते हैं, ask the teachers to go to the library with you. यहाँ किसी किस्म की लिमिटेशन है। हमारे पास
लाइब्रेरी में बुक्स परचेज करने के लिए इतना पैसा होता है कि आई कैन टेल यू इन द प्रेजेंस ऑफ माय कलीग्स कि ये पूरा खर्च नहीं करता। प्लीज बाय एज मेनी बुक्स एज यू विश, प्रोवाइडेड दे कम टू सर्टेन नॉर्म्स। ये वो आपकी टेक्स्ट बुक्स होनी चाहिए, उसके दिल्ली यूनिवर्सिटी ने कुछ नॉर्म्स स्पेसिफिक किए हुए। आस्क योर टीचर्स टू बी लिबरल, एंड आई डोंट थिंक तकरीबन हर डिपार्टमेंट का जो पैसा है वो अनएग्जॉस्टेड रहता है, और ये पैसा हमें नुकसान करता है जो अनएग्जॉस्टेड, जो हमें यूजीसी से मिलता है। इसके अलावा खालसा कॉलेज इज अ मेंबर ऑफ मैनी लाइब्रेरीज। एक दिल्ली यूनिवर्सिटी का अपना सिस्टम है जो दिल्ली, जिसको हम DULS कहते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी सिस्टम, EDULS, ई लाइब्रेरी है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के बहुत सारे जर्नल्स, केस स्टडीज, बुक्स, ई बुक्स, वो सारी की सारी अवेलेबल हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे, एंड ईच वन ऑफ यू शुड बिकम ए मेंबर। आपको वहां जाने की जरूरत नहीं, यहाँ बैठ के खाली हम आपको पासवर्ड देंगे, यू यूज इट एंड यू कैन एक्सेस द दिल्ली यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी इवन फ्रॉम योर होम। जो टीचर्स आपको बुक्स रेफर करते हैं, जो आपको बताएंगे आपके कोर्स के लिए, प्लीज आस्क देम टू टेक यू टू द लाइब्रेरी सो दैट यू कैन सी वेयर दीज बुक्स आर प्लेस्ड। आपको इनिशियली थोड़ी सी दिक्कत होगी, but I don't think this should be a limitation for you. इसी तरीके से यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, जो यूजीसी हमारी फंडिंग एजेंसी है, हमारी मेंटोरिंग एजेंसी है, और जो हमारे टीचिंग हायर एजुकेशन का जो बेसिक स्टैंडर्ड्स है जो सेट करती है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने अपनी लाइब्रेरीज बनाई हुई, बहुत सारी इंटरवर्सिटी फैसिलिटीज हैं। साइंस के स्टूडेंट्स, फॉर इंस्टेंस प्रोफेसर सुखांतो इज हियर, ही इज यूजिंग द इंटर यूनिवर्सिटी एक्सेलरेटर, आप कहते हो जी उनको, IUAC, IUCA, you know, it is in Vasant Vihar, it is a nuclear facility. अगर आप न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ते हो, कोई कोर्स उसमें लेते हो, तो प्रोफेसर सुखांतो कैन टेक यू टू दैट लैब। There are many other, I mean, in different departments, I may not be knowing everything. Department of Biotechnology, for instance, जिसमें हम zoology और botany की बहुत सारी labs हैं, you can visit. In fact, your teachers will be taking it as a part of your course as well. You will be visiting various museums, you will be visiting various sanctuaries, you will be visiting various labs as part of your course. प्लीज आज जो है ना, वो खाली बुक्स पढ़ के जो रटा मारने वाला सिस्टम वो खत्म हो चुका है, एंड दैट इज वन रीजन व्हाई द CUET वाज इंट्रोड्यूस्ड। कि बच्चे जो है वो रेटोफिकेशन के थ्रू जो है वो पास हो गए थे, इतने मार्क्स ले आते थे, यहाँ आके उनको पता नहीं चलता। CUET has been introduced mainly with this intention. It will improve upon. I am not saying this is perfect, but this was decided very rationally by the Ministry of Education. After looking at the differential parameters, जो different schools के examination का pattern था, वो इसलिए ये CUET किया। So all of you know CUET in a certain sense it is a leveler for you. पहले हम कहते थे कि नहीं ये बच्चे के मार्क्स बहुत है, ये बहुत इंटेलिजेंट है, अब सब ट्रांसपेरेंट पब्लिक टेस्ट पास करके आए। So all of you are at the equal footing. So लाइब्रेरी में अपनी बुक्स के अलावा ऐसे बहुत सारे जर्नल्स जो भी अवेलेबल हैं, जो हम फिजिकल फॉर्म में भी परचेज करते हैं, पर बहुत सारी चीजें जो हैं आपको इमीडिएटली Dr. PD will, after the last date, we will not immediately, but immediately after the last date of the admission, we will be issuing you the identity cards. या तो printed form में, or we will mail you. You can get them printed from the market. उसमें एक स्कैन कोड होगा, QR कोड जिसको हम कहते हैं, वो आप किसी भी जगह पे, दैट इज योर बेसिक आइडेंटिफिकेशन, आप किसी भी जगह उसको स्कैन करोगे, खालसा कॉलेज का आपका पूरा रिकॉर्ड आ जाएगा।
I also do the same. I have the college identity card. Dr. PD has given me that. मैं कहीं भी जाता हूँ, एयरपोर्ट किसी जगह पे भी, तो कहते हैं ये कार्ड को कहीं मैं जी kindly scan this. So you know through the internet they immediately get in touch with the Khalsa College. So this is your testimonials. So it is a very great identification and please don't lose it. कई बार हम बड़ा कैजुअली इसको बाहर फेंक देते हैं, ये किसी को दे देते हैं। किसी को अगर हमने अपना आइडेंटिटी कार्ड दिया तो इम्पर्सनेशन ऑफ क्रिमिनल एक्टिविटी, प्लीज अवॉइड दैट। सिमिलरली जो हमारा स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट, इट इज वन ऑफ द मोस्ट एक्टिव डिपार्टमेंट इन द यूनिवर्सिटी। खालसा कॉलेज इज चैंपियन इन मेनी गेम्स। पिछले 2-3 साल को अगर छोड़ देते हैं जो कोविड की वजह से था, क्योंकि हम कोई ज्यादा इंटर कॉलेज एक्टिविटी कर नहीं पाए हैं, मगर क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, एथलेटिक्स, यू नो इन नंबर ऑफ गेम्स 5-6 में तो हम यूनिवर्सिटी के चैंपियंस हैं। बहुत सारी गेम्स में खालसा कॉलेज के बच्चे जो है नेशनल टीम्स को रिप्रेजेंट करते हैं। 20वीं सदी में भारत ने सिर्फ 2 ही वर्ल्ड कप जीते थे, ज्यादा किसी को कौन से हैं। 83 में क्रिकेट, वेरी गुड, उसमें खालसा कॉलेज का स्टूडेंट था, आपको याद है कौन था? महेंद्र अमरनाथ। 1976 में एक हॉकी का भी वर्ल्ड कप जीता था, उसमें भी खालसा कॉलेज का एक स्टूडेंट था। कौन था वो? अशोक दीवान। The winning legend, both of them are living and they often come to the college and they, you know, जब वो इस कॉलेज के गेट के अंदर एंटर करते हैं तो you see their emotions. When I go back to my school in my village, उस टाइम जब हम गेट क्रॉस करते हैं तो एक डिफरेंट किस्म के इमोशंस होते हैं। एंड महेंद्र अमरनाथ, जब भी मैं अगर आपके सामने अभी भी उसको टेलीफोन करूंगा, और चाहे वो टीवी के इंटरव्यू में बैठा होगा, इमीडिएटली ही विल पिक अप द टेलीफोन कि दिस इज द टेलीफोन फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ खालसा कॉलेज। नॉट दैट जसविंदर सिंह इज टेलीफोनिंग, it is the principal, he will immediately respond to that. So this is the commitment, you know, which so 20वीं सदी में जो 2 वर्ल्ड कप आए, उन दोनों में खालसा कॉलेज की और दिल्ली यूनिवर्सिटी की बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन। इवन आफ्टर दैट, सो आई विल नॉट गो इनटू दैट। अभी भी जो हमारा अभी कॉमनवेल्थ का एक कैंडिडेट अभी ग्राउंड में खड़ा है, अमोज जैतो, जब वो कॉमनवेल्थ में खेला था तो ही वाज लीडिंग, ऑलमोस्ट गेनिंग द 3rd पोजीशन व्हेन ही फेल एंड उसकी एक टांग की नब्ज जो थी, वो 400 मीटर ले खेल रहे थे, इन द लास्ट लेग he was head of you know, he was at the 3rd position when he fell and you know वो नब्ज जो उसकी फट गई and he had to, you know, he had to be operated. He is there right away in the ground right now. And after that, Asian Games में his team scored the 2nd position, or the 2nd Asian Games का second जो medal आता, silver medal India के बिहार से he has played. So there are many such, and you can also do the same. Why I am saying? Because nothing is impossible. In the corporate sector, there are many leaders. बहुत सारे हमारी जो प्लेसमेंट्स होके, डॉक्टर बिबू, he is the professor also, he is going to be professor very soon, so he is looking after the placement जो बेस्ट कंपनीज हैं। आई थिंक इस साल हमारी कितनी 250 के आसपास हुई होगी, almost 250 till now have been placed and with good package. अगर कोई 5 लाख से नीचे देता है तो they are not allowed to enter the Khalsa. उससे ऊपर कोई पैकेज देगा तो only then we will allow. I remember, you know, when I joined University of Delhi, तो डी स्कूल के सामने हमारे जो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स है उसके सामने लिखा हुआ था कि एनीबॉडी ऑफरिंग लेस देन 6 lakhs नीड नॉट एंटर दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। आई हैव डन द सेम थिंग कि अंडर ग्रेजुएशन के लिए
वैसे मैं आपको बताऊं कि आज जो हमारे टीचर हैं वो भी तकरीबन जब पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद, नेट करने के बाद, privileges being students of this university. There are many activities in the college. बहुत सारी societies हैं. डॉक्टर नाचिकेता यहाँ नहीं है. डॉक्टर कुलदीप अगर यहाँ है तो she can join me on the stage. बहुत सारी activities, a number of such activities are there. और students अपने आप they organize themselves. फोटोग्राफी की है, स्केचिंग की है, नेचर एनवायरमेंटल सोसाइटी है, डिविनिटी सोसाइटी है, और देयर आर मेनी अदर सोसाइटीज. इनफैक्ट मुझे तो उनके बहुत सारे के अभी नाम भी याद नहीं है. नंबर ऑफ सच एक्टिविटीज आर देयर एंड यू कैन फाइंड देम दे आर मेंशन्ड इन द प्रॉस्पेक्टस. सो यू कैन बिकम मेंबर्स ऑफ दीज सोसाइटीज. बहुत सारे स्टूडेंट्स इमीडिएटली आपको 2-3 दिन के बाद दे विल पुट अप देयर डेस्क एंड you have the choice, you can join any one of them. So it is a very wonderful world, the University of Delhi, but with a lot of responsibilities. ये फ्रीडम जो है ये बगैर जिम्मेदारी के नहीं है, जो मैंने आपको बताई. यहाँ पेरेंट्स का रोल उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना स्कूल में था, मगर उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट इन अ सर्टेन सेंस. जब सुबह बच्चा कॉलेज आएगा तो काइंडली सी टू इट के वो सुबह खाना खा के जरूर आए. आई हैव सीन मेनी स्टूडेंट्स falling on the ground just because they did not take anything in the morning. यहाँ तो उनका लो बीपी होता है. जब हमारा कभी ब्लड डोनेशन कैंप होता है तो अगर 150 बच्चे ने रिपोर्ट किया तो उसमें 60 बच्चों का वो लो बीपी होता है. This age, no, your BP should not be low. Take adequate calcium, अच्छी प्रोटीन वाली डाइट लो, and please हर चीज क्लास या लाइब्रेरी नहीं होती है. एक्टिविटीज हैं और कॉलेज का इतना बड़ा प्लेग्राउंड है. Perhaps we have the largest playground in University of Delhi in the North Campus. शायद हमारे से बड़ा एक शिवाजी कॉलेज है जिसका कॉलेज से बाहर है प्लेग्राउंड. अदरवाइज खालसा कॉलेज has the largest playground in terms of acreage. और यहाँ तकरीबन डॉक्टर इंद्रप्रीत जो अभी क्रिकेट के ट्रायल्स कंडक्ट करवा रही हैं, आई वाज आल्सो देयर इन द मॉर्निंग. वेलकम डॉक्टर विकास गुप्ता जी, रजिस्ट्रार ऑफ द यूनिवर्सिटी. सो प्लेग्राउंड का तभी फायदा है अगर आप उसका इस्तेमाल करते हो. चाहे आप फुटबॉल खेलो, वॉलीबॉल खेलो, बैडमिंटन है, क्रिकेट है. क्रिकेट तो आजकल सभी खेलते हैं. बास्केटबॉल है जस्ट एडजॉइनिंग दिस. एथलेटिक्स, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के हम ग्राउंड्स को यहाँ पुलिस लाइंस में या दिल्ली यूनिवर्सिटी का अपना इंटरनेशनल लेवल का प्ले ग्राउंड है जिसमें हमारे पास 400 मीटर का ट्रैक है. प्रोफेसर अनिल कलकल ही प्रोवाइड्स एवरीथिंग. और मल्टीपर्पज हॉल है जिसमें आप इंडोर गेम्स खेल सकते हो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की. एंड वी हैव टेकन द स्पेशल परमिशन फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली. इसी तरीके से कॉलेज में हॉस्टल है. मैंने आपको अपनी टीचर्स के बारे में बताया है, नॉन टीचिंग स्टाफ के बारे में बताया है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में डिटेल्ड इंट्रोडक्शन दी है, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज के बारे में बताया है आपको. टेनिस फॉर इंस्टेंस is the best ground in the University of Delhi as far as Khalsa College is concerned. You should play tennis also. इसके अलावा गर्ल्स का हॉस्टल जो अभी ऑपरेशनल है, बॉयज का भी हम करने जा रहे हैं. बहुत सारी क्वेरीज आ रही हैं पेरेंट्स से कि बॉयज का हॉस्टल आप क्यों अलॉट नहीं कर रहे. इट इज अंडर कंप्लीशन. अभी इसको 2-3 महीने लगेंगे
January, February में most likely we will start if you know all the electric connections and other things are, because we have to get many approvals. नहीं तो अगर approvals नहीं होती तो फिर दिक्कत होती है. तो जो हमारी टाटा पावर वाले हैं, जो लोकल डिस्ट्रीब्यूटर हैं इलेक्ट्रिसिटी के, they are putting up the plant there, and it will take 2-3 months. And as far as the internal finishing is concerned, it is almost ready. Only minor modifications are left in the boys' hostel. Girls' hostel is fully furnished, completely air conditioned, और बहुत सारी girls ने आप में से admission वहाँ लिया भी होगा. And let me make a very humble submission that everybody may not be able to get the admission in the hostel. There are limited facilities, limited seats. हमारे पास 147 seats हैं जो हमने first year, second year, third year में apportion की हुई. हो सकता है कि आपको इस साल हॉस्टल कुछ एक बच्चों को नहीं मिले, but do well in your exams, give good performance, and if you are able to show your good performance and dedication to your studies, we may offer you the hostel next year. Boys के लिए हमारे पास तकरीबन 210 सीटर हॉस्टल है, और वो भी हम कुछ इसी तरीके से ही एलोकेट करेंगे. But now you know your course is a 4 years course. तो वो कोर्स जो है उसके लिए भी हमें फोर्थ ईयर के लिए भी कुछ सीट्स इसमें रिजर्व करनी पड़ेगी, और वी विल हैव टू फाइंड सम अल्टरनेटिव्स. कॉलेज हैज डन, इट इज यू नो, यहाँ सभी धर्मों के बच्चों का इक्वल सत्कार किया जाता है. वी डू नॉट इंटेंड टू इम्पोज सिखिज्म ऑन एनीबॉडी. प्लीज बी क्लियर अबाउट दिस. गुरु तेग बहादुर साहब ने, जिनके नाम पे ये संस्था चल रही है, और गुरुद्वारा कमेटी की तरफ से हमारी आप सबको ये प्रार्थना है कि सब ने मिलजुल कर रहना है. सभी धर्मों का, आप किसी भी रिलीजन को, किसी भी फेथ को बिलोंग करते हो, वी आर सपोज्ड टू रिस्पेक्ट ईच एंड एवरी. वंस यू आर एडमिटेड, इट इज ओनली टिल द एडमिशन दैट यू आर Sikhs and you know the unreserved students. But after you are admitted, you know it is the responsibility of the college and all of us together to ensure that nobody feels isolated, nobody feels discriminated. कॉलेज में और भी बहुत सारे प्रोविजंस हैं, आपकी क्लासरूम जब भी बताएंगे. इससे अलावा जो बच्चे फीस नहीं दे पाते, कॉलेज की स्टूडेंट्स वेलफेयर कमेटी है, जिसमें हम बहुत सारी फी कंसेशन, टीचर्स ने खुद भी इस साल, दे इनफैक्ट इनिशिएटेड देयर ओन सिस्टम आल्सो. और तकरीबन 3.5 लाख के आसपास, डॉक्टर प्रतिभा यहाँ है नहीं है, 3.5 या 4 लाख के आसपास टीचर्स ने अपने पैसे कलेक्ट करके उन बच्चों को दिए हैं जो फीस नहीं दे सकते थे सेकंड और थर्ड ईयर. इसके अलावा बहुत सारी और संस्थाएं जो स्टूडेंट्स विद डिफरेंशियल एबिलिटीज, वी हैव कॉन्टैक्ट विद हेल्प द ब्लाइंड फाउंडेशन इन हैदराबाद. दे आल्सो हेल्प अस, they provide the scholarships directly to the students. We help the students, especially SC/ST minority students, OBC students. चाहे आप OBC का reservation नहीं था, even if you belong to the OBC category, you can apply for the scholarships from the Government of India and also from Government of India. From all these places you are eligible, and college will take all your responsibility in processing your applications. College की accounts branch regularly ये काम करती है. Again, Dr. P.D. Sharma helps us in designing the software and accommodating all those students. बहुत सारे students हमारे तकरीबन इस साल I think around 15 students are foreign students, P.D. साहब. अभी तक तो 12 we have confirmed जो foreign students हैं. उनमें बहुत सारे hostel में भी होंगे, 4-5 लोग. So please provide them the company. ये फॉरेन स्टूडेंट्स जो हैं वो खालसा कॉलेज इंडिया के, हमारी यूनिवर्सिटी के एम्बेसडर्स हैं.
आई रिमेम्बर अभी भी अफगानिस्तान से जो हमारे पास स्टूडेंट्स आते थे पिछले 2-3 साल से कम हो गया उनका नंबर, अदरवाइज वो अभी भी जब भी कभी ट्रबल में होते हैं तो दे गिव अस अ कॉल। कुछ एक वहां के बच्चे अमेरिका कनाडा में माइग्रेट हो गए और हमारी जो एसोसिएशन कनाडा में है, दे विल बी विजिटिंग। प्रोफेसर अरुण इफ ही इज हियर, ही विल टेल यू कि हमारी बहुत सारी जो स्टूडेंट्स हैं खालसा कॉलेज के, उन्होंने बाहर भी एसोसिएशंस बनाई हुई हैं। इफ यू टेक एडमिशन देयर दे विल हेल्प यू इफ यू आर स्टूडेंट फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी और खालसा कॉलेज। They will provide you the initial accommodation if you do not have. They also help you in your meals, क्योंकि कई बार जब हम जाते हैं इन कंट्रीज में तो हमारे पास हमें अब यूज तो नहीं होते हैं हम वो इतना ऑयल रिच या वो जो मसालेदार खाने वाला होता है, तो दे प्रोवाइड यू द इंडियन फूड। Many gurdwaras for instance there they helped us. इसके अलावा बहुत सारी नेशनल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस हम करते हैं जिसमें बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं और इमीडिएटली हमारी 2 कॉन्फ्रेंसेस होने वाली हैं। एक 1 और 2 दिसंबर को भाई वीर सिंह जी हु इज द रविंद्रनाथ टैगोर ऑफ पंजाबी लिटरेचर, वो हमने ऑर्गेनाइज किया है, और एक जो है वो 5, 6 और 7 जनवरी को 2023 को नेक्स्ट आफ्टर 2 मंथ हमारी फर्स्ट सिख हिस्ट्री कांग्रेस होगी। And Chairman Sahab has gone to meet the Vice President to request him. Otherwise, he would have been here. He has sought the time to request the Vice President to be the chief guest for that. So, all these facilities are there. अभी थोड़े दिन के बाद ही Vice President of India is coming to University of Delhi. So, the coordinator for that has requested me कि खालसा कॉलेज से भी मैं प्रोफेसर जगीर हैं, आप उनके टच में आ सकते हो, you can get in touch with the University of Delhi. So these are the various things, various possibilities. I may not be remembering everything, I may not be the time being so short, I may not be giving you everything, but I would request the parents कि आप अपने बच्चों की डाइट का एक जरूर ख्याल रखना, और बच्चों अब आप स्पोर्ट्स या एनएसएस या एनसीसी जरूर ज्वाइन करो। और डॉक्टर विकास he is there, he is going to address us next. University of Delhi, as I said in the beginning, has given us the new undergraduate curriculum framework जिसमें आपका एडमिशन हुआ है, जिसमें क्यूट के थ्रू आपका एडमिशन हुआ है और बहुत सारे नए कोर्सेज इसमें आए हैं, और जो भी आप खेल कूद वहां करते हो उसके भी मार्क्स आपके एग्जामिनेशन में इनकॉर्पोरेट होंगे, प्रोवाइडेड यू ऑफ दोज स्किल कोर्सेज और द वैल्यू एडिशन कोर्सेज। क्लस्टर की मैंने आपसे बात की है कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली रजिस्ट्रार साहब हैज ऑलरेडी नोटिफाइड द क्लस्टर्स। सम ऑफ यू मे बी अगर वो फैसिलिटीज खालसा कॉलेज में नहीं है तो आप उन इंस्टीट्यूशंस में जाओगे, बट अगेन ऑब्जर्वेंस ऑफ डिसिप्लिन इज द अटमोस्ट रिस्पांसिबिलिटी। नहीं तो कोई हमें अपने कॉलेज में घुसने नहीं देगा। So all these are the things, and अगर आप कोशिश करो कि अपना टिफिन जब आप घर से सुबह आते हो तो काइंडली आप अपना बैग जरूर रखो, पेन और कॉपी जरूर आपके पास होनी चाहिए। मोबाइल तो आजकल सभी के पास है, पर प्लीज कीप दी मोबाइल्स ऑफ व्हेन यू आर इन द क्लास। प्लीज डू नॉट distract the teachers, क्योंकि टीचर्स जो है आजकल it is more of a communication, it is more of a mentorship. They will be giving you many so many readings, so much material जो आपको नेट पे भी अवेलेबल होगा, but all those things teacher will be mentoring you in the classroom through discussions. ये ऐसा नहीं है कि हम अपने नोट्स लेके आ जाते हैं और क्लास में पढ़ाना शुरू कर देते हैं। It is not like this. It is more of an interact. और जो नया कुरिकुलम अडॉप्ट हुआ है वो लर्निंग आउटकम बेस्ड है। आपकी असेसमेंट जो होनी है टीचर ने करनी है क्लासरूम में या अल्टीमेट एग्जामिनेशन में, वो आपने कितना नॉलेज प्राप्त किया है उसके आधार के ऊपर, नॉट कि आपने कितना मग अप किया। सो ऑल दोज आर द थिंग्स, एंड देन the students they also organize various trips to educational and other industrial trips
बहुत सारी केस स्टडीज करने के लिए भी बच्चे जाते हैं, जिसके लिए हम सुविधा प्रदान करते हैं. I will not take much time, but with this, I request all of you to use the facilities of the University of Delhi and Khalsa College to the fullest extent and make your lives much more successful. चढ़ती कला च रहना है, बिल्कुल जड़ा है वो डिप्रेशन आने की कोई चीज नहीं है. I think the life is so beautiful. मैंने तो बहुत enjoy किया to be very frank. And I also want my students, my family members, everybody to enjoy to the fullest extent. Why not? God has given us so much, but be responsible, be environmental friendly, be जो गुरु नानक साहब ने किया है कि ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ अगर थोड़ा भी है तो किरत सच्ची और सुच्ची किरत करनी है और उस परमात्मा की रज़ा ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ जो भी ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ है वो ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ. With these words, I hope that you will cooperate, and I wish you all the best, and I express my gratitude to all the parents who have joined us today on this orientation. Thank you very much. Thank you so much, sir, for your inspiring words. I'm sure students will have an enhanced personality when they leave. After 3 years, Khalsa College would be proud of them. Now, we are honored to have amongst us our Registrar of Delhi University, Shri Vikas Gupta ji. I would invite him on the dais, sir. Namaskar. Professor Jaswinder ji, Principal Khalsa College, teachers sitting on dais along with me, teachers in front of the dais, my dear students. I apologize for being late because there were certain other commitments and meetings which were going on. I just finished that and rushed to this college. I heard Professor Jaswinder ji talking about university, talking about colleges, talking about everything, and he also touched about the new structure where we are entering. एक यूथ का एक दौर है हम सबके साथ कि हम ऐसे किस स्ट्रक्चर में पढ़ने जा रहे हैं जिसके बारे में हमें पता नहीं है. मैं बहुत ज़्यादा टाइम आप लोगों का नहीं लूँगा क्योंकि ये ओरिएंटेशन प्रोग्राम है. आप लोग नए आए हैं, मिलेंगे लोगों से, धीरे धीरे समझेंगे चीज़ें. तो सिर्फ कुछ चंद चीज़ें जरूर आपके साथ शेयर करूँगा जस्ट टू बूस्ट योर कॉन्फिडेंस टुवर्ड्स द इंस्टीट्यूशन. I, on my personal behalf and behalf of the university, welcome you to this 100-year-old university now, which is celebrating its centenary celebration in the year 2022-23. And I'm sure you are in one of the best institutions of our University of Delhi in North Campus, where you are sitting. National Education Policy भारत सरकार ने लॉन्च करी 29 जुलाई 2020 को, और ये कहा गया इस पॉलिसी को पढ़ें, देखें, समझें और इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें. दिल्ली यूनिवर्सिटी ने पूरे 2 साल लिए इस पॉलिसी की रूपरेखा तैयार करनी है. ये जो पॉलिसी आई, इसका सेंट्रल पॉइंट ऑफ फोकस जो है वो स्टूडेंट्स है. मैं फिर दोहराऊंगा, इस पॉलिसी का सेंट्रल फोकस पॉइंट जो स्टूडेंट हैं उनको ध्यान में रख के इसका स्ट्रक्चर डिजाइन किया है. आप जिस कोर्स में एडमिशन ले रहे हैं इसमें मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट के भी ऑप्शन है. आप 1 साल बाद भी कोर्स छोड़ सकते हैं, आप 2 साल बाद भी कोर्स छोड़ सकते हैं, 3 साल बाद भी छोड़ सकते हैं, 4 साल बाद तो आप पास आउट हो जाएंगे. और इस तरीके से आप वापस भी आ सकते हैं जब जब आप आना चाहें, आपकी सुविधा अनुसार. इस स्ट्रक्चर में यह भी सुविधा दी गई कि जो स्लो लर्नर्स हैं वो अगर कम पढ़ना चाहें थोड़ा कम भी पढ़ सकते हैं, और ये भी सुविधा दी गई कि जो ज्यादा पढ़ना चाहें वो ज्यादा भी पढ़ सकते हैं. हर सेमेस्टर हमारा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है 22 क्रेडिट्स को लेकर. उस क्रेडिट के स्ट्रक्चर में
हमने प्रावधान किया कि आप 18 क्रेडिट्स लेके भी आगे जा सकते हैं और 26 क्रेडिट्स लेके भी आगे जा सकते हैं। आप हर सेमेस्टर में अगर 26 क्रेडिट्स लेते हैं, आई नो कि उसमें हमारे टीचर्स का दायित्व, हमारे टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी, लेकिन आई एम श्योर my teachers are there to support you in your endeavors, because again the student is the central point of focus of the implementation of the NEP and the undergraduate curriculum framework 2022 launched by this university. आपका बैच कई चीजें सोचता है, आप लोगों का बैच सोचता है कि हमने CBSE का एग्जाम भी दिया और हमारा ही पहला बैच है जिसने CUET भी दिया। But you should be happy and you should be thankful to the God कि you achieved whatever you have worked for. You should always be thankful to the God कि हमें जो ईश्वर ने दिया वो बहुत कुछ दिया। एक पुरानी पिक्चर का गाना है जिसकी चंद लाइनें हैं, इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। अगर इसकी लाइनें आज के प्रत्यक्ष में मैं देखूं तो शायद मुझे लगता है कि भारत सरकार ने जब ये शिक्षा नीति लाई, उसने शायद कहीं ना कहीं पे ये लाइनें सुनी होंगी, समझी होंगी कि किस तरीके से वी हैव टू बिल्ड द लीडर्स ऑफ द कंट्री। हम सब देख रहे हैं कि हर जगह हिंदुस्तान के लोग हर जगह एंड दे आर डूइंग देयर ड्यूटीज फ्लॉलेसली। We get the respect, we get the support, whatever we are looking for from any country abroad. हमें कोई ऐसी कंट्री नहीं है जो भारत के लोगों को किसी भी तरीके से भेदभाव करती है। ये ट्रेडिशन, ये वैल्यूज, ये एथिक्स हमने अर्न किए। इस स्ट्रक्चर के अंदर भी ये चीजें, प्रिंसिपल साहब ने बताया, कई हमारे कोर्सेज हैं जो एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्सेज हैं। आप अपनी लैंग्वेज के साथ दूसरी लैंग्वेज भी सीखना चाहें सीख सकते हैं, और उसको हमने इस तरीके से डिजाइन करा है कि जिसको किसी भाषा के बारे में बिल्कुल नहीं पता वो भी सीखे। हो सकता है इस कॉलेज में वो टीचर ना हो, तो हमने क्लस्टर बनाया कि दूसरे कॉलेजों के टीचर के साथ मिलकर बच्चे जो पढ़ना चाहें वो पढ़ें। स्किल एनहांसमेंट कोर्सेज रखे कि आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, कि सपोज किसी बच्चे को छोड़ के जाना पड़ता है तो वो 21 स्किल यहाँ से कैरी करके जाए कि अपनी जीविका आगे चला सके। नहीं तो कोई बच्चा कोर्स छोड़ना नहीं चाहेगा, वो कोशिश करेगा 3 साल बाद और 4 साल बाद पढ़ सके। इस कोर्स के अंदर ये भी प्रावधान है कि जो बच्चे ऑनर्स में आए हैं सीधे वो ऑनर्स का कोर्स लेके जाएंगे, ऑनर्स की डिग्री 3 साल बाद भी मिलेगी और उनको 4 साल के बाद भी ऑनर्स की डिग्री मिलेगी। लेकिन हमारे कुछ बच्चे जो BA प्रोग्राम में, BCom प्रोग्राम में आए हैं, वो कई बार ये सोचते हैं कि शायद हम एक उस कोर्स में नहीं आए जो ऑनर्स का था, लेकिन उनके लिए भी इस डिग्री में ये प्रावधान है कि जब आप 4 साल का कोर्स करेंगे आपको भी ऑनर्स की डिग्री मिलेगी। आपकी ऑनर्स की डिग्री विद ए कॉम्बिनेशन ऑफ 2 सब्जेक्ट्स होगी जो आप कैरी करेंगे अपने करिकुलम में, विद ए कंसेप्ट ऑफ मेजर एंड माइनर व्हिच वुड वाइडन योर हॉरिजन टू परस्यू फर्दर स्टडीज इन आइदर ऑफ द 2 सब्जेक्ट्स व्हिच यू वुड लाइक टू टेक अप फर्दर इन मास्टर डिग्री। तो धीरे धीरे जब आप इस पॉलिसी के बारे में जानेंगे, मैं आई एम श्योर कि हमारे जो प्रिंसिपल साहब है, ही इज वेरी डायनामिक, वेरी सपोर्टिव, क्योंकि हम कई जगह पे यूनिवर्सिटी में सर की भी मदद लेते हैं। और आप लोगों को, यू आर द लकीस्ट वन दैट यू हैव दिस काइंड ऑफ ए प्रिंसिपल एंड द टीचिंग स्टाफ हु इज देयर टू सपोर्ट यू इन योर एंडेवर्स। चंद लाइनें मैं फिर बोलूंगा। सोच को बदलो, सितारे बदल जाएंगे। सोच को बदलो, सितारे बदल जाएंगे। नजर को बदलो, नजारे बदल जाएंगे। कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं पड़ती, कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं पड़ती। दिशा को बदलो, किनारे बदल जाएंगे। आप लोगों को ध्यान रखना है कि आपने किस डायरेक्शन में कैसे मूव करना है। ये फ्रीडम आपके पास है। हम आपको गाइड करेंगे, हम आपको सपोर्ट करेंगे। वी विल प्रोटेक्ट यू।
चूज आप करेंगे, लेकिन जो भी चूज करे, कुछ भी करे, सिर्फ ये सोच के करना कि ये देश हमारा है, हमारा ही रहेगा, और हम ऐसा कोई कार्य नहीं करेंगे जो हमारे देश के हित में नहीं होता। मैं ये चीजें आप लोगों से एक्सपेक्ट करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, यू मस्ट कीप दिस एनवलप विद यू till your death. You are here in this world. My best wishes to all of you, and we look forward that you would become the leaders of this country one day when it is going to come. My best wishes. Thank you so much. Namaskar. Thank you so much, sir. Now I would request Principal Sir to formally welcome Vikas Gupta, sir, please. Now, the time for the timetable orientation, I would request Dr. P.D. Sharma to guide us and the students for the new timetable that has been allocated to you and the subjects SEC, WAC, and AEC. Over to you, P.D. sir. Welcome everybody. As we were told, we are into a 4-year program with multiple exits. If you count 4 years, there are going to be 8 semesters. Each semester having 22 credits. The idea of credit is not very clear. I'll just explain that also. So 8 semesters and 22 credits per semester, that makes 176. As Mr. Sir, Dr. Vikas Gupta said, you can exit after 2, 4, 6 or 8. That means if you exit after 2 semesters, you would have accumulated 22 plus 22, 44 credits. Similarly, after second year, it would be 88 and then 132 and then 176. Now the credits that you earn, they remain with you. And there is a time window during which you can return back to the college. Yes, it still has to pan out how it will effectively be happening. But yes, there is a provision. I understand that most people are not going to quit and join. But there might be some few. We will not. We know as the time comes. The second thing that comes with the program is that even though you have entered a course which has a specific name, for example, physics honors or maybe economics honors, you can fairly tailor your degree, a customized degree. So this is the probably in India, which is the first or second attempt to get across the idea of customizable degrees, where you can choose what exactly your degree should look like. However, as you know that if you look for, it will not be possible to enlarge it. The important point is that there are exits out of board. And then what is described out of here is the name of possible degrees, which is at the moment I'm intentionally omitting because I don't want to add to the confusion before we start. So, present concern is semester 1. There are 8 of them around, too much to handle in one day. So, we will focus only on first semester, which is starting today. Now, in the first semester, everyone is going to study some papers. Like students का immediate concern तो यही है कि कौन से पेपर पढ़ने। एक लॉन्ग टर्म है कि डिग्री का क्या नाम होगा, कैरियर के क्या ऑप्शंस हैं, वो एक अलग बात है। So, for the honors programs, which are in English, Hindi, Punjabi, history, political science, economics, physics, chemistry, botany, zoology, electronics, computer science, commerce,
there are going to be 3 core disciplines. That is three papers of the main discipline. For example, if you have taken physics, then there are going to be 3 papers of physics. If you have taken commerce, there are going to be 3 papers of commerce. So this is our main discipline, and each of these papers is for 4 credits. So that gives me 3 into 4, 12 credits. Then there is going to be one generic elective, which is some other discipline. If you are doing physics honors, not physics. If you are doing commerce honors, not commerce. Something else. It could be anything. It could be Hindi, it could be pol science, it could be economics. Something other than your main discipline, that is the generic elective, which is again of 4 credits. Then there is a skill enhancement course of 2 credits, a value-added course of 2 credits, and an ability enhancement course of 2 credits. So that makes 12 plus 4 plus 2 plus 2 plus 2, 22 in semester 1. By and large, the breakup is going to be same in the subsequent semesters also. However, certain nomenclatures might change, right? For example, AEC course is going to be studied only in first 4 semesters. Skill course is going to be studied only in first 4 semesters. So what will happen in later semesters? They are going to be replaced by some other elective. So effectively, right now, if we look at first semester, the immediate concern is that we are going to do 7 papers, 3 of which are core courses having more than majority of the 22, 12 credits out of 22, so more than 50%. Plus there is a generic elective, and then there are skill, value addition, and ability enhancement. Now, it is not an honors course, but instead it is a physical science or life science type of program. Well, there is a little bit of confusion in here. Even though during the admission process, the application process, and in the UG admission bulletin, the program courses are written as program courses. BA program, BCom program, BSc Life Science, BSc Physical Science programs. But the nomenclature is going to be changed if a student who has come in BSc program does 4 years, he is going to or she is going to get a bachelor honors in physical science. So there is a overlap. But since the popular name is BA program, BCom program, so we are still calling it BA program, BCom program. Even though the final degree name might be different, but that is going 4 years ahead from right now. So if it was a physical science or life science type of situation, then in earlier honors programs, there were 3 papers of the same discipline. Physics student is doing 3 papers of same physics, but in case of physical science, it is going to be physics, chemistry, mathematics, or maybe physics, computer science, mathematics, depending upon which course you have taken admission. For life science, it is going to be botany, zoology, chemistry, which was just the way it was earlier. And rest of the things are same. There is going to be a generic elective, just like in honors courses. There is going to be a skill, a value addition, there is going to be an AEC. That means the principal difference between an honors program and a physical science, life science type of program is, instead of doing a single discipline as main discipline, you are doing 3 disciplines. So that is why it is called multidisciplinary program. Because you are doing 3 disciplines instead of doing 1 discipline, which is your core, main area. अब generic elective तो है, वो तो सब में है, but the principal, the more than 50% of the course is going from a particular discipline. For example, economics में 3 like papers are economics every semester. So that is going to be the main honors course. But here, each of these 3 are of 3 individual disciplines. So at the end of the 8th semester, there would be a certain number of botany papers the life science would have done, certain number of zoology would have done. So this is a multidisciplinary degree. Then the BA program, one of the most popular courses of our university, also the largest course in our university. And if I look back at the experience, one of the most challenging and confusing course in the university. Because it's a concept in itself. अगर आपने देखा होगा कट ऑफ में,
Delhi University is offering 206 combinations in BA program. You can practically study anything with anything. Only the choices of the places will get discussed. That's all. So in BA program earlier, or people who have been familiar with BA program earlier, there used to be two disciplines: botany, economics, pol science, or maybe history, pol science, or maybe maths and history, something like this. So two discipline में 206 choices are there. Our college doesn't have all the choices. We have only 5 disciplines, and if you make a pairwise choice of 5 disciplines, call them A, B, C, D, E, then you end up getting 10 possible combinations. Now 10 possible combinations में से 2 को rule out कर दिया. Rule out क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि जितने ज़्यादा combinations आप लेंगे वो चला नहीं सकते हैं. Ultimately 48 ही classes हैं, right? So there is a limitation in how you operate. So out of the 5 disciplines we have, which are history, pol science, economics, maths, and music, 2 are ruled out. That means we will not have a student from history, maths, and we will not have a student from political science, music. Rest everything is also 8 out of 2. Of course, students must be present here who are doing these. So in earlier case, there used to be 2 discipline courses per semester. Now, to keep the structure similar to the rest of the courses, there are going to be 3 courses. अब 2 discipline है, 3 course. So naturally, what is going to happen? एक discipline के 2 करने हैं. So what happens is 2 core courses of the discipline combination that you have taken admission in. For example, if you have taken admission in economics history, तो एक पेपर economics का है, एक history का. Plus तीसरे के लिए you have a choice between either economics or history. So that means if you have a combination of A plus B, then one discipline course is to be chosen either from A or from B, and that makes again a 4 credit, so 12 credits for 4 courses. For example, अगर आपने economics history में admission लिया है, तो your papers can be economics plus history plus economics, or maybe economics plus history plus history. So a BA program student is going to do 2 papers of one discipline, और ये जो choice है, ये student right? आपने economics history में admission लिया है, economics history हमने आपको दे दिया, पर जो तीसरा पेपर है, वो आपको choose करना है, right? Same way, generic elective choose करना है, skill choose करना है, value addition choose करना है, AEC choose करना है. So out of 7, 4 are choices. Now, a little about AEC, that is ability enhancement course. There are going to be 4 in the 8 semesters. First 4, 1 to 4 में every semester 1 ability enhancement course. And what is that? Out of the 4 courses, 2 are going to be in environment science and 2 are going to be in language, Indian language. Now, that means every student will be doing environment science के 2, language के 2 courses. But which semester? That is left to the college, right? So how we are doing it? In semester 1, that is the one which is starting today, the courses physics, chemistry, botany, zoology, electronics, computer science, mathematics, physical science, life science, business economics and economics. In this semester, all of them would be doing environmental science, right? And the courses Hindi, English, Punjabi, history, pol science, BA program, BCom, BCom honors, they would be doing language in this semester. Next semester mein flip. Those who did language now will do environment in next, and those who did environment now would do language in next. So that would be a flip arrangement. Then again, second year there would again be a flip arrangement. Third or fourth में फिर से एक flip arrangement. The purpose of doing this is that you have a consistent utilization of resources across the year. For example, let us say all of us do environment. तो language के लिए कुछ होगा ही नहीं.
और अगली बार एनवायरमेंट के लिए कुछ नहीं होगा, right? So it is like half and offering them in split mode, that is right. So those who are doing EVS, they have already been registered for EVS, but those who are doing the courses who are doing language, they will have to give option for the language. So some of your friends may have, some of your friends may not have. So it's individual specific. Now comes the idea of grading graduates. By and large, the general structure is 25% is internal assessment and 75% is the. The internal assessment generally comprises of three things: the attendance, assignments, and class tests. So there are certain marks which are designated for attendance. In a typical environment, out of 100, 25 is internal assessment. 25 may 5 for attendance, 10 for assignment, 10 for test. But if the paper is 50 marks, तो ये proportionally आधे आधे. Now we just follow the statutes of executive council. जो हमें बताया गया है, how the formulation is to be done, how marks are to be computed. Everything is automatic. So attendance is recorded like more than 95% online in the class itself, and there is no subsequent challenge around. At the end, all the now for the grades, 4A plus A, B plus B, C, D, and F and C, they are around. And understanding grades is quite simple. Each grade has a certain number of points. So if, for example, if there is a course which is of 4 credits, and a particular student gets a A grade. So for A grade, I have 8. This A grade is 8. So I am going to multiply 4. That is the number of credits by 8 and get 32 points for this. And using these points, we calculate the semester grade point average. So if there are 7 courses, like in this semester we are going to have 7 courses, and let us take an example. The courses are of 444, जो 3 आपके मेजर है, main courses है, एक GE है जो 4 credit का है, plus there are skill, VAC and AEC which are 2 credits each. And suppose somebody gets A, B, A plus, O, C, A and B plus, then simply multiply the credits by the points जो पिछले table में थे, and you get a total points of 172 divided by total number of credits, that is the SGPA of this semester. The same is done for all the semesters to get the cumulative. Now comes the idea of reading the timetable. There is a simple legend about reading the timetable, which is given at the bottom. It says L stands for lecture, I for interactive, right now there are no interactive classes. P for practical, T dot N, tutorial for which N, and room numbers are shown in your package. So if you read this cell, it says LCMC 101. That means the lecture class of paper called CMC 101 or CMC 101 class. Which the paper name is here? It is described. CMC 101 is management principles and application. Then LCMC 101, teacher name is some MP4CM, which is again described here for the name of the teacher. And room number is 213. So reading timetable is pretty simple. All the legends are explained there itself, and where are these available? This is the transactional side. Many of you might have seen already. So there are these are the current timetables for program courses and for GPO courses. These are the ones which are available. Many of you, I guess, I checked in the morning. About 200 people had logged in. So many of you would have got the mail yesterday. Maybe for some of you the mail might have been delivered in spam, right? But anyway, so you are aware of the things. Still, for those who have not yet logged in, there is an online platform for academic activities, which looks like this, and a login information has already been sent to the students who have taken admission for paid fee till about
बजे के बाद कल पे किया है बी को, तो उसका अभी नहीं बना होगा, बिकॉज एडमिशन तो ऑनगोइंग है, अभी चल रही है. So as at every logical point, when we finish the second allocation, when we finish the third round, when we finish TCA, at the conclusion of each round, the students who have admitted between the previous and the current position, they will be added on. तो fairly automatic process है. इसमें impatient होने की जरूरत है. So if you routine weblinks that might be used, that are just a recap. This is the public website जो आप सबने देखी होगी, HGTV खालसा view is there. For the students and staff, the transactional part of it, that is also online. So what do you do? What are the transactions like? Paying fee, getting some information, etc., etc. Reading the timetable, etc. These are transactions. Plus the online platform for academic activities, that is the guide HGTV online. इसका login password आपको भेजा जा चुका है. जब कोविड का टाइम था तो हम इसी पे ऑनलाइन क्लासेस भी चला रहे थे, अब भी चला सकते हैं. But at that time it was being managed centrally. Now it has been given to the departments. So there are, you would see, आपने देखा भी होगा, there are some departments who are using it more than others. So that is between the students and the teachers. It has been rather popular, especially for assignment submission, online quizzes and so on. Then we have UOD.ac.in, which is already a familiar name. And we have a subscription for English. ये जो English वाला है, ये HGTV खालसा only link इसका लगा है. This is the subscription of InflipNet, which is a collection of very large number of books in various subjects. इसमें बहुत सारे titles जो free of cost आपको available हैं. You can use them anywhere in the world. Number runs into millions. But यहाँ ऐसा है कि जरूरी नहीं है कि जो books आपको चाहिए वो सब यहाँ होंगे. कुछ होंगी, कुछ नहीं भी होंगी. Then there are other such resources, university का consortium जो principal साहब बता रहे हैं, which you can access, but that access can be by and large in the college. VPN के through from home हो सकती है, but वो shaky है. I'm not too confident कि वो आप कर पाएंगे from home. But yes, from college, we should be making account for every individual student for Wi-Fi, and you log in using your Wi-Fi password. And get access to the NKN resources, National Knowledge Network का जो resources हैं, which is a group of a few thousand journals, lots of books, and many libraries across India. Now we come to the sensitive issues, which is going to confuse major and minor. Major and minor is pretty confusing. I personally never thought it could be so confusing. However, as the matter stands today, जब आप syllabus देखेंगे यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे, लोगों से बात करेंगे, तो आपको 10 में से 9 लोग confused होंगे. To the extent, lot of our departments are confused in university. कि ये major minor क्या है? So having a clarity in mind is important. Major is something which you achieve or you don't. That means you still get a degree. You still get a BSc Honours Physics or BSc Honours Economics degree, but without a major or without a minor. So वो तो हमेशा possible. But getting a degree with economics as major or economics as minor, whatever. What does it need? It needs you to accumulate a certain number of credits, which is specified. Now, when do you say a credit is accumulated? If you pass in a paper, you get that credit. If you fail in a paper, you don't get that credit. So that means getting even a C or a D grade is fine enough to get a credit. But failing, getting an absent, that is not getting the credit, right? So if you accumulate a certain number of credits in a particular discipline, you get a major. Again, if you get a certain number of credits in another discipline which is different from your main discipline, you get a minor. How much, what proportion, and in which way? Now comes the question to this.
So first thing is there is a band, there is a boundary. There is a boundary. जैसे क्रिकेट में होती है ना लाइन है बाउंड्री. The ball has to cross the boundary. अब वो क्रॉस करके कितनी दूर जाती है वो इम्पोर्टेंट नहीं है. Just has to cross the boundary. So that specified number of credits need to be crossed. If you go beyond, still it is major or still it is minor. Now, how do you like? For major and minor, respectively, you get a major if it was an honors course, 50% credits. That is 88 out of 176 are in the discipline. ये कैसे आएंगे? ये आएंगे 20 DSC से, which is stands for discipline specific core. Think of core as a compulsory paper. Discipline specific core and 2 discipline specific electives. अब इलेक्टिव क्या है? इलेक्शन है, आपको चूज करना है. मान लीजिए आप इलेक्टिव नहीं लेते, डीएससी की जगह आप जेनरिक इलेक्टिव ले लेते हैं, तो कोर तो पढ़ना ही है, तो एट मींस 20 तो आ ही जाएंगे. बट आपने क्योंकि डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव नहीं लिया, जेनरिक ले लिया, तो वो 2 छूट गए. देयरफॉर आपके 88 नहीं बनेंगे, बट 4 क्रॉस 2 दैट इज 8, 80 क्रेडिट्स बनेंगे. क्यों बन रहे हैं 80 क्रेडिट्स? क्योंकि मैंने डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव की जगह जेनरिक इलेक्टिव ले लिया, मेरी चॉइस है. बट साइमल्टेनियसली आई हैव फोरगोन द पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग अ मेजर. So that means it is you who is deciding what you are doing. Are you getting a major? Are you planning to get a major? If you are planning to get a major, you should make options or take options according to that plan. So knowing exactly where are you trying to go would be of value. If you are really casual about like, all right, then you really don't know कि last में क्या होगा. Because once you cross a semester, you have also foregone the possibility of making a change. अब जो हो गया वो हो गया. So you may realize it later. Accordingly, if you go to the multidisciplinary honors, अभी हमने बात किया था, life science है, BA program, BCom program है, तो यहाँ पर मेजर के लिए रिक्वायरमेंट है 80 credits out of 176, right? और ये 80 क्रेडिट्स कैसे आएंगे? ये आएंगे 6 DSCs से डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर, 3 DSCs डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव्स इन फर्स्ट 6 सेमेस्टर, और लास्ट वाले में 2 DSC और 6 DSC प्लस अ डिसर्टेशन इन द fourth year. That means if you look back at it, every semester you are doing 3 core papers. So in 6 semesters you will do only 18. तो 3 साल में तो मेजर होगा ही नहीं, आपके कोर ही पेपर पूरे नहीं होंगे 20. तो मेजर करने के लिए तो 4th ईयर में जाना पड़ेगा. अगर 4th ईयर में आप जाते हैं, जाने के बाद भी आपका मेजर मिस हो सकता है, क्योंकि अगर आपने ऑप्शंस ठीक से नहीं लिए, राइट? आपने पहले से ही प्लान किया है कि मुझे 4th ईयर में नहीं जाना, you have a different set of trajectory or progression for taking options. आपने पहले से प्लान किया है मुझे 4 ईयर करना है, तो एक different set of trajectory. That means it is your individual planning. The point, that limited point I want to put across and emphasize is, look at your individual planning and just don't go by what my friend is doing. Right? Your friend's life and your life may be same, I don't know, but mostly they are never same. So make choices for yourself. Now, how do you get a minor? It is possible to get a major only. It is possible to get a minor only. It is possible to get a major as well as a minor. That depends upon आपने credits कैसे accumulate किए. You know, how much gold and how much silver. Right? So, how do you get a minor? Irrespective of आप honors में हैं या कि multidisciplinary में, 28 credits चाहिए माइनर अर्न करने. जनरली ये जीई से आ जाएंगे. कैसे आएंगे? अगर आपने एक ही डिसिप्लिन के जीई लिए तो कितने जीई लेने पड़ेंगे? 7.
because 7 into 4 is 28. अगर आपने बीच में डिसिप्लिन चेंज कर दिया, 3 पॉलिटिकल साइंस के ले लिए, बाद में 5 इकोनॉमिक्स के ले लिए, तो ना पॉल साइंस माइनर हुआ ना इकोनॉमिक्स माइनर। Fine. So that means a careful decision has to be made accordingly. Plus there is a little leeway given. वो क्या है कि अगर आपके 28 क्रेडिट पूरे नहीं हो रहे हैं, तो at some places a skill course can also be counted. बट उसके बारे में अभी कोई बहुत सर्टेनिटी या क्लैरिटी नहीं है, तो जब तक 4 साल में होगी तब की बात है। So how should you be choosing options? The immediate problem in front of everyone is this. Maybe some friends of yours would have told you कि हमें अपने कॉलेज में हमने ऑप्शंस चूज करने का फॉर्म मिल गया, हमने ऑप्शंस भी चूज कर लिए। हमारे जो ग्रीवेंस वाले हैं उन्होंने मेरे को आगे बताया कि स्टूडेंट्स की एंजाइटी है कि हमारे ऑप्शंस क्यों नहीं हुए, whereas in another ex college or so हो चुका है। So I think I have answered the question already. Choosing options is not a casual thing, which without investigation you can do. That is the reason last night we are opening option form on 5th November. That means today is 2nd, 3rd and 4th, 2 days. 2 days to think. And it is open till 20th. So then in fact you can think for 6 days, you can think for 10 days. It's your choice. But I don't want a hasty decision कि मुझे तो पता नहीं था. So make a informed choice. So have a clarity about what you are looking for, plan carefully. Choose options that will enhance your career prospect, that can be advice given, whatever they are, further study, job, entrepreneurship, etc., etc. Consider the doability. Now this is something which I am saying with a little bit of pinch of salt. Sometimes, you might choose the option without, because it is popular or because it is glamorous or because it is the in thing. But whether it will be doable for you. Doable in what sense? The time doability का direct consequence किसके साथ है? Available time. How much time you are able to devote onto it. So there may be a particular option or subject which is not as demanding as another one. So just look at आपके पास कितना time है, कितना time आप actually invest कर पाएंगे, उसके accordingly doability would be available. Make a choice after careful deliberation. And you can consult your teachers, you can consult your parents, you can consult your friends, your counselor, whoever. But take good deliberation. Think about it carefully. Then make a choice. And then stick to the choice. Last 6 semesters, more than that. Last 6 years, 12 semesters. We have not accommodated any change in option. Neither will we. That means once you choose, now you like it or you don't like it, you are going to do it. But you are given enough time to choose. So do an informed decision. Right? एक general advice ये है, avoid using the phone for filling such forms. Better if you have a machine, a computer, a desktop available, use that. Because phone एक touch device होता है और touch में कभी गलती से कहीं touch हो जाता है. So it is prone to error. So if possible, avoid sensitive work on mobile phone. Do it on. ज़्यादा आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप ये CUET और इस सब में options और preferences ये काफी कर चुके हैं. So you know about it. So take your time to make a choice, and we will not be accommodating change in options. One more thing I would like to tell. एक हमारे पास AEC कोर्स है जिसके बारे में हमने बात की थी, और कुछ कोर्सेज लैंग्वेज कोर्स इस बार करेंगे और कुछ अगले सेमेस्टर करेंगे. इन लैंग्वेज कोर्सेज
In language courses, we have two languages available with us, Hindi and Punjabi, and they are there with A, B, and C. We call them Hindi A, Hindi B, Hindi C, Punjabi A, Punjabi B, Punjabi C. First information, all those students who have taken admission under Sikh minority category would be studying Punjabi only. That is the policy division of the college. अब पंजाबी में ही उनको चूज करना है A, B या C, right? Now जो जो सिख माइनॉरिटी से नहीं है आए, वो हिंदी पंजाबी में से जो लेना चाहे, उनके लिए ये ऑप्शन। अब ये A, B, C कैसे चूज करना? सबसे ज्यादा एरर यहीं पे होते हैं। It is as simple as that. What is the language you are taking? I am taking Hindi. Question to ask: have I studied Hindi in class 12? If the answer is yes, option A. If the answer is no, that means मैंने 12th में हिंदी नहीं पढ़ी. Then second question to ask: have I studied Hindi up to class 10? If the answer is yes, it is Hindi B. If the answer is no, तो एक ही ऑप्शन बचता है हिंदी C. Because everybody would have studied till class 8. Especially जो हमारे पास नॉर्थ ईस्ट से या फॉरेन स्टूडेंट्स आते हैं, उन्होंने हिंदी नहीं पढ़ी होती, क्लास 8 तक भी नहीं पढ़ी, तो उनके लिए कंपल्सरी टेस्ट ऑफ हिंदी अलग से रहता है, वो लिमिटेड नंबर रहता है और कुछ और अल्टरनेटिव यूनिवर्सिटीज में स्पेसिफाई करती है. सेम गोज फॉर पंजाबी. इफ यू हैव स्टडीड पंजाबी टिल 12th, you will have to take Punjabi A. If you have studied till 10th, you will have to take Punjabi B. If you have studied till 8th or never studied, हमारे पास never studied वाले बहुत सारे आते हैं, then you have to take Punjabi C. Our Punjabi department puts extra effort and help you learn Punjabi right from alphabets. जो नर्सरी में सिखाते हैं ना, एड़ा उड़ा, वहां से शुरू करो. So there is only an initial hesitation in some students. मैं तो कभी पढ़ी ही नहीं पंजाबी हिंदी. But once the student starts attending classes, in last 15 years I have been looking at this, no one has come back कि हिंदी पढ़ने. It is just the initial inertia. So I appreciate our Punjabi department and the effort they put in. So don't have to be hesitant. Ultimately, हमारी heritage है. So and in fact, the number of options का जो नजरिया है वो भी बदल जाता है. There have been students जिन्होंने पंजाबी C में पंजाबी सीखी थी, बाद में जनरल इलेक्टिव पंजाबी में. Now this is just a information department conveners है आपके इंग्लिश में माध्यम है, हिंदी जैसे संख्या लोहिया, पंजाबी जैसे इंग्लिश करता हुआ, पंजाबी स्पिरिचुअल में क्वेश्चन है. Some of them are present here. Economics question commerce missing is also the water. That means Dr. Srivankar, he is also vice principal. He has been running the conducting this stage. Electronics, Dr. Theory, computer science. Information and queries. I understand there is going to be a lot of information. One last thing I have to share. Room number 18 is academic office. यहाँ पे दो लोग बैठते हैं, both very cooperative, Mr. Sandeep and Mr. Patwa. So all your concerns, मेरा section कौन सा है, मेरा ट्यूब ग्रुप क्या है, वैसे तो सब ऑनलाइन भी है. बट अगर आपको कोई डाउट है, कुछ भी इशू है, तो आप 18 में जा सकते हैं, which we call academic office. Old name for that is DDP. उसके अलावा आप डिपार्टमेंट कन्वीनर अपने टीचर्स से
कोई इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, और इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप interacting with the teachers to help you make good choices. Thank you very much. Thank you so much, sir. I'm sure students have got a lot of clarity now what papers to choose. That was for the academic. Now, moving on to the societies, I would invite Dr. Nachiketa Singh, who will brief you about the various societies that are there in college. And like Principal said, it's not only academic, it's your entire personality which grows in 3 years. So, over to Nachiketa, sir. I'm Nachiketa Singh. I'm convener Department of Political Science, and I'm involved in a lot of extracurricular societies. So before I elaborate on that, first of all, huge congratulations to all the freshers, first year students, and their parents for joining this great institution named after the great Sikh Guru, Sri Guru Tegh Bahadur. Welcome to Khalsa College. Uh, as they ask that how is the Joes? So I think it must be very high as far as your enthusiasm is concerned. Well, Mr. P.D. Sarma has explained you as to how you have to navigate through the academic, you know, course exercises which you are going to start from today onwards. But there is another world that you will witness in this college, that is your extracurricular activities and co-curricular activities, which we give a lot of importance to, because those things also matter a lot as far as your character is concerned, your personality is concerned. So, uh, a balanced kind of approach towards studies and uh, extracurricular activities would be very beneficial for all students in the long run. So we are here to facilitate that. We provide a lot of avenues and platforms for your talents to be, exhibited, and the mentors are there to help you out in all those activities. So, apart from those students who are going to join through the extracurricular, activity quota or sports quota, the general students are also offered opportunities to be part of several extracurricular societies which are operating in this college, beginning with the NCC, the NSS, then the Photography Society, the Fine Arts Society, the Civil Services Society, the Debating Society, then the Dance Choreography Society, then the Fashion Society. A lot of options to be chosen from. So the purpose is to provide you a platform where you, express yourself outside the classroom in a manner which you think you are best at. And these are very important things. So you will have a list of societies in the website to choose from, and then you will meet the mentors. And some societies have put up their help desk outside. You can register yourself in course of time, and those things are part and parcel of the corporate life of this college. So you will be required to join formally and devote your time, energy in those societies. But after completing your, classroom work, attending classes, it's basically an exercise which you have to indulge in the afternoon time. So you have to balance accordingly, manage your times accordingly.
So parents are also requested to cooperate with their children. Those in the dramatic society, I just forgot to mention that it's a society, it's a very very good society where the practices and all they do in the afternoon. So be prepared for the late afternoon sessions of these extracurricular societies. We will interact more, in course of time in coming days. There's a lot of things which we can share today, but the time is very limited. I won't take much time, but just another thing I would like to touch upon, which I think has not been communicated to you, is that with regard to discipline, we have a zero tolerance policy. So you need to read the prospectus of the college and know what all you are expected to do and not to do. So do's and don'ts you have to keep in mind, because this is definitely an opportunity which you were longing for such a long time to come your way. It has come finally. It will give you a lot of freedom in college life. You will get a lot of freedom to do things as per your wish. But the freedom has also certain limitations. So you have to keep that in mind, and you have to maintain the decorum in the college. You don't have to indulge in any activity which might attract, punishment, which could be also, getting expelled from the college. So keep that in mind. You have to be very, very careful about discipline, and you lead the discipline in charge soon. And then, of course, I don't know whether you know about the sporting heritage of this college. It's huge, and I don't have time to elaborate on that. So those sports, enthusiasts who have taken admission and are going to take admission in course of time on the sports quota will have huge opportunity in this college to take up their individual sports as their hobby. As professionals also, you can be part of the college team. So that's what in a nutshell I wanted to share with you. You are free to contact me. I'm there in the college from 10 to 4 o'clock. So you can, irrespective of your course and subject, you are free to approach me anytime you want to. Thank you very much. Thank you so much, Dr. Nachiketa. Now, finally coming to the conclusion of today's orientation program, again, I would like to thank all the parents who spared their valuable time and assisted their wards here to the college. I guess now the duty of the parents and now the students are on your own. So I thank you all, and again on behalf of Shri Guru Tegh Bahadur Khalsa College, I welcome all the first year students to a new beginning, and please you now welcome and to move and interact with your teachers as per your timetable. You can move to your respective departments. Thank you. Thank you.